नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल टॉक्स और मैं हूं शिशिर त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम यानी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। उस मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको 2013 की एक फीचर फिल्म का एक सीन डिस्क्राइब करता हूं। 2013 में आई कोर्ट रूम ड्रामा जॉली LLB में हम देखते हैं कि बोमन ईरानी अपने 3-पीस सूट से अपनी शानदार BMW से उतरते हैं। पीछे एक और शानदार XUV में उनके सेक्रेटरी और जूनियर्स की सेना उतरती है और उनके पीछे भागने लगती है। वो हर तरह से एक बड़े बिजनेसमैन, एक कॉर्पोरेट हेंचो लगते हैं। पर यह गलतफहमी हर उस इंसान को हो सकती है जिसका पाला अदालत और वकीलों से ना पड़ा हो, क्योंकि अगर पड़ा होता तो वो ये जानता कि आज के नए नवाब काला कोट पहनते हैं। 2016 में देशद्रोह के आरोप में फंसे JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बचाव में कई बड़े वकील उतर गए थे, जिनकी फीस चुकाने में कुमार को पूरी जिंदगी लग जाती। लेकिन वो एक वर्ग के हीरो थे और उनके लिए सोली सोराब जी जैसे दिग्गज मैदान में बिना एक पैसा लिए उतर पड़े थे। पर अदालत एक ऐसी जगह होती है जहां न्याय की कीमत होती है। इट हैज़ अ कॉस्ट, जिसे चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती और हर कोई कन्हैया कुमार जितना भाग्यशाली भी नहीं होता। अगस्त 2016 में एक समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि फॉर्मर कोल सेक्रेटरी HC गुप्ता, जो कि कोयला घोटाले के मामले में आरोपी थे, उन्होंने अपने जमानत को सरेंडर कर दिया और विशेष अदालत से कहा कि वो जेल के अंदर से मुकदमे का सामना करना चाहते हैं। कारण, वो मुकदमे का आर्थिक बोझ उठाने में असमर्थ थे। क्या भारत में न्याय इतना महंगा हो गया है कि एक वरिष्ठ नौकरशाह भी के लिए भी न्याय पाना कठिन हो गया है? उस समय पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम ने मुझसे बात करते हुए जो कहा था वो गौर फरमाने लायक है। उन्होंने कहा था, जिसे मैं उन्हीं की भाषा में पढ़ता हूं, द एक्सपेंसेस इन द हायर कोर्ट्स आर एस्ट्रोनॉमिकल. The lawyers have made it a practice to earn adjournment somehow, as they charge hefty amount per appearance. The adjournment suits them. This is a racket that needs to be stopped from functioning. मई 2016 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सेंटर ऑफ डेथ पेनाल्टी द्वारा जारी डेथ पेनाल्टी इंडिया रिपोर्ट में एक टिप्पणी की गई थी, जिसपे भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। द रिपोर्ट नोटेड, very often the concern about the quality of legal representation has been couched in terms of inadequacies of the legal aid system. More than 60% of the prisoners sentenced to death had private lawyered in their trial court and high courts. It must be a cause of extreme concern that prisoners and their families wanted to avoid the legal aid system at all costs and therefore went to great lengths to ensure that they had private legal representations. It is a fact that the inadequacies of legal aid system in India push millions of litigants, majority of which belongs to economically weaker section, a fact highlighted in various reports, to hire expensive courtroom heroes, making justice impossible for many. ये मेजॉरिटी ऑफ लिटिगेंट्स की मजबूरी बन जाती है कि वो महंगे वकीलों को करें, महंगे वकीलों की सहायता लें, क्योंकि हमारे देश में लीगल एड जो है वो उतना मजबूत नहीं है। जस्टिस BS चौहान एंड जस्टिस SA बोबडे, who went on to become Chief Justice of India in August 2013, while dismissing an anticipatory bail plea of IPS officer PP Pandey, accused in the Ishrat Jahan fake encounter case, observed. This observation is also very important and you should take note of it very, very importantly. The judges said, "We are sorry to say that the court's time is being used by senior advocates and big criminals. We can say on oath that only 5% of the time is being used for common citizens, whose appeals are waiting for 20 or 30 years. This court has become a safe haven for big criminals. You come here for the 6th or 8th time for anticipatory bail and we should hear as if we were a trial court." In yet another case involving former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala, who was serving a 10-year jail term in corruption case and had sought extension of his interim bail, a bench of Justices HL Dattu and SJ Mukhopadhyay observed, "Sometimes I wonder at my system.
Here is an appeal of the year 2013 which gets a quick hearing. In how many cases are we doing so? That's why poor man feels that the system cares only for the known person and of the unknown persons get ignored. The bewilderment of the my lords at the unequal access to justice was obvious, but the irony rests somewhere else. Host of the lawyer who are elevated to judgeship knows the rules of the game. Then why do they allow justice to evade the poor? The apex court has through its various landmark judgments addressed concerns that perhaps touches every aspect of citizens' life, from environmental concerns to administration. All has been regulated by the higher judiciary time and again. Then what stops them from regulating the ground that underpins the judicial processes? In this respect, an important observation was made by Kalis Varun Raj, a lawyer practicing in the Supreme Court of India and High Court. In his article in The Hindu in March 2014, he said, it reads, in a Maharashtra case, MP Vashi versus Union of India, the levy of exorbitant fees by senior lawyers was the matter in the issue. Vashi argued that most of the distinguished lawyers, by making use of their star value and face value, charge unfair fees. He submitted that a kind of monopoly is being created in the business, detrimental to the interest of the common man at the other side, who is unable to afford such highly priced lawyers. Unfortunately, the Bombay High Court was not inclined to accept this contention, and a historical opportunity for institutional introspection was lost. While the fact remains that 5 to 10 lakh per hearing charges can be peanuts for corporate houses embroiled in legal battles, or a superstar making 200 crore film, or even for a superstar activist, it is likes of SP Gupta who has to give up all hopes of justice at it cost too much.